Greetings, students. Today we are going to see the application of time-independent Schrodinger wave equation to solve the problem of particle in a potential step. Okay, potential step. So let us first draw this potential graphically. This is y-axis, this is x-axis. On y-axis you plot potential, on x-axis you plot position, okay, and the potential is in such a way that it is 0 up until x equals to 0, and at x equals to 0 this takes a sharp value of v naught. So isn't it a step? एक स्टेप की जैसा है ना. x इक्वल्स टू 0 के पहले द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 0 और x इक्वल्स टू 0 से उसके बाद द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज v naught. So how do you write it graphically? The potential step Vx is 0 for x less than 0, and this is v naught for x greater than equal to 0. You can write Vx equals to 0 for x less than equal to 0 and equals to v naught for x greater than 0. Doesn't matter. सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए कि आप x इक्वल्स टू 0 पे या तो 0 लें या v naught लें. x इक्वल्स टू 0 पे एक साथ दोनों वैल्यू नहीं मेंशन करते, राइट. सो दिस इज हाउ द पोटेंशियल स्टेप इज डिफाइंड मैथमेटिकली एंड दिस इज हाउ इट इज शोन ग्राफिकली. फाइन. सो आपके पास दो रीजन्स हो गए. कौन कौन? दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2. नाउ द प्रॉब्लम इज यू हैव अ पार्टिकल जो कि इंसिडेंट हो रहा है लेफ्ट से राइट की ओर. ठीक है, रीजन 1 में एक पार्टिकल ट्रैवल कर रही है. पार्टिकल ट्रैवल कर रही है मतलब उसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन ट्रैवल कर रहा है. फाइन. सो दो केसेस. केस नंबर 1, जबकि इस पार्टिकल की एनर्जी, दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट. इस पोटेंशियल की हाइट के, स्टेप की हाइट के से ज़्यादा बड़ी हो इस पार्टिकल की एनर्जी. दिस विल बी आवर केस 1. और केस 2, जबकि इस पार्टिकल के एनर्जी कहीं तो भी v नॉट से छोटी होगी. दिस विल बी केस 2. सो इस पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम को हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं. केस 1, व्हेन पार्टिकल्स एनर्जी E is greater than v naught, and case 2 when particles energy E is less than v naught. So let us start with case 1 first. So fine, come on, let us write Schrodinger wave equation. So हम लोग केस 1 की बात कर रहे हैं जहाँ की पार्टिकल के एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप के हाइट से बड़ी है. यू कैन सी दिस. फाइन. सो श्रोडिंजर इक्वेशन आप लिखें रीजन 1 के लिए और रीजन 2 के लिए. सो फॉर रीजन 1 माइनस एच कट स्क्वायर, oops I'm sorry, minus h cut square upon 2m d square. Now we'll write psi 1 for region 1, okay, upon dx2 plus v is 0. रीजन 1 में पोटेंशियल 0 है, सो यू डोंट राइट एनीथिंग हियर. सो v0 इक्वल्स टू e psi 1 x, और दिस इज फॉर द रीजन x लेस देन 0. सिंप्लीफाई इट. d2 psi 1 upon dx2 plus
2me upon h cut square psi 1x equals to 0. This is your equation 1. Okay, and this is for x is less than 0. Now for region 2, x greater than equal to 0, for this region you have value of potential equals to v naught. Okay, so write it, minus h cut square upon 2m d square psi 2 upon dx2 plus how much, v naught psi 2 equals to e psi 2, and this is for x greater than equal to 0. On simplifying, you can get d2 psi 2x upon dx2 plus 2m upon h cut square e minus v naught psi 2x equals to 0. For x greater than 0, this is equation 2. Fine. Now again, you see, this is the equation which we have already seen while solving the particle in a box problem. Fine. So equation 1 and equation 2 are nothing but the ordinary differential equations. So you rewrite solutions. Solution for equation 1 and equation 2 can be given by psi 1x is a e to the power iota k1x plus b e to the power iota minus iota k1x. We have already seen this in the previous problem, so I am not spending too much time on this solution. C e to the power iota k2x plus d e to the power minus iota k2x, wherein k1 square kitna hoga, students? You should be able to tell it. This constant term is supposed to be k1 square, and here this one is taken as k2 square. So k2 square will be 2m e minus v naught upon h cut square. So take this as equation 3, this is equation 4, this is equation 5, and this as equation 6. Fine. Now students, what we are doing is we are dealing with time independent Schrodinger wave equation, right? Meaning we are dealing with stationary states problem. So the total wave function will be how much? You remember psi xt happened to be psi x 0 and then e to the power minus iota omega t, right? So if we write total wave function, so this you write psi 1 xt is a to the power iota kx plus b to the power minus iota, I'm sorry, it should be k1x multiplied by e to the power minus iota omega t, and psi 2 xt is equal to c e to the power iota k2x plus d e to the power minus iota k2x e to the power minus iota omega t. Take this as equation 7, this as equation 8. So further simplify it, so you write psi 1 xt will be a e to the power iota kx minus omega t plus b to the power b e to the power minus iota, it should be k1x, right? k1x plus omega t. Fine. This is simple algebraic rearrangement, right? I want to prove something for you guys.
and that is why मुझे पूरा टोटल वेव फंक्शन लिखना पड़ा. Now this is k2x minus omega t and this is d e to the power minus iota k2x plus omega t. Now guys ध्यान से देखिए, equation let me write 7a and this is as 8a. Look at this expression. This is a traveling wave which is traveling towards positive x direction with the passage of time. आपको traveling wave का form याद है, k1x kx minus omega t. This form says you that the wave is traveling towards positive x, whereas my kx plus omega t, this tells you the wave traveling towards minus x direction. ध्यान से देखिए, हम इस पोटेंशियल को देखें. हमारे पास क्या था, पार्टिकल है जो ट्रैवल कर रही है लेफ़्ट टू राइट. ओके, मतलब वेव फंक्शन इसका लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है. फाइन. सो दिस द फर्स्ट टर्म in psi1x, it tells you the incident wave, whereas the second term tells you about the reflected wave. ठीक है. उसी तरह से psi2 this term again talks about the wave traveling is positive axis. So the wave traveling along positive x direction in region 2, this will be transmitted wave. This will be transmitted wave. But what about this? This is wave which is traveling towards negative x direction in region 2. अब region 2 में समझने की कोशिश कीजिए. region 1 में wave incident हुआ तो obvious है कि reflected होगा. ठीक है. So you have got incident wave, reflected wave. रीजन 2 में ट्रांसमिटेड वेव. बट रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ से आएगी? देर इज नो बाउंड्री फ्रॉम वेयर द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इसीलिए हम psi2 से ये वाले टर्म को वैनिश आउट करेंगे. राइट. ये जो आपको टाइम इवोल्यूशन फैक्टर लगा करके टोटल वेव दिखाना पड़ा मुझे psi1 और psi2 xt, ये सिर्फ इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए कि रीजन 2 में ये सेकेंड फैक्टर विल बी वैनिशिंग आउट. ओके, सो इस टर्म को हम वैनिश आउट करते हैं और हम वापस से फिर से सिर्फ x की psi1x और psi2x की तरफ जाएंगे. हम टाइम इवोल्यूशन फैक्टर यूज़ नहीं करेंगे. टाइम इवोल्यूशन फैक्टर यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये समझाना कि दिस टर्म यानी दिस टर्म गोज आउट टू बी 0. ओके, सो लेट अस राइट. एक लाइन आप लिख सकते हैं, द सेकेंड टर्म इन द इक्वेशन 8a represents the wave traveling towards negative x direction in the region 2. However, there is no boundary at x greater than 0, so that there will be no reflection in region 2 and hence d has to be 0, meaning this term needs to be neglected. Fine. So in that case, what becomes your psi1x
a to the power iota k1x plus b to the power minus iota k1x. I am writing it back again, and psi 2x as c to the power iota k2x. Okay, so here it is. You have got the wave function for region 1 and region 2, जहाँ की इंसिडेंट वेव हम इसे साई इंसिडेंट कहें. दिस इज e to the power iota k1x. रिफ्लेक्टेड वेव हम बोल रहे हैं साई r. b e to the power minus iota k1x. and transmitted wave psi t बोले, this is c to the power iota k2x. ठीक है, let us call this equation 9, equation 10, equation 11. Fine, just keep this in a bracket. ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट तक पहुंचाएगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. अभी हमारे पास क्या है, ये रीजन 1 के वेव फंक्शन, रीजन 2 का वेव फंक्शन दोनों है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग so we are going to apply the boundary conditions. So applying boundary conditions at x equals to 0. x equals to 0 पे क्या होना चाहिए, साई एक्स भी कंटिन्यूस होनी चाहिए और डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स भी कंटिन्यूस होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए साई एक्स कंटिन्यूस, बिकॉज साई क्या बताएगी आपको इवेंचुअली, मॉड ऑफ साई स्क्वायर. ध्यान से समझिएगा, साई एक्स मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर को बताएगी, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी. सो बेसिकली साई एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए बाउंड्री पे. ये इस बात से आती है, ये कहाँ से आती है, ये इस कारण से ज़रूरी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो वैरी करती है कंटिन्यूसली, एंड हेंस साई एक्स हैज़ टू बी कंटिन्यूस. वेयर एज डी साई बाई डी एक्स क्यों कंटिन्यूस होना चाहिए, बिकॉज दिस अल्टीमेटली गिव्स यू द मोमेंटम ऑपरेटर. इफ यू रिमेंबर, माइनस आई एच कट डी अपॉन डी एक्स, दिस वॉज मोमेंटम. सो ये इवेंचुअली आपको मोमेंटम की वैल्यू देती है, और चूंकि मोमेंटम को कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा स्पेस में, इसलिए डी साई बाई डी एक्स को भी कंटिन्यूस होना चाहिए. ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस एक्चुअली रियल फिजिकल मायने रखती हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. सो लेट अस मेक दिस. ये था आपका पोटेंशियल स्टेप. एट एक्स इक्वल्स टू 0 साई एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी एट एक्स इक्वल्स टू 0 इस रीजन का साई और इस रीजन का साई शुड बी इक्वल. सो applying the first boundary condition, psi 1x should be equal to psi 2x at x equals to 0. चलिए देखते हैं what was psi 1x. a e to the power iota k1x plus b e to the power minus iota k1x equals to c e to the power iota k2x at x equals to 0. x को 0 कीजिए, this gives you a plus b equals to c. This is equation number how much? 12. Fine. Now applying second boundary condition. So d psi 1x upon dx should be equal to d psi 2x upon dx, and both at x equals to 0. So when you apply this, what do you get? k1 a plus b is equal to, I'm sorry, this should be a minus b, right? Should be equal to k2 c. You can just do it on your own
डी साई वन अपॉन डी एक्स कितना, डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आयोटा के वन एक्स. So this gives you how much, k1, in fact iota k1 a minus b, and then similarly d psi 2 upon dx gives you d by dx of c to the power iota k2x. So this gives you iota k2 c. When you equalize these two, iota iota gets cancelled and you are left with k1 a minus b equals to k2 c. Very good. So this is your equation 13. Using equation 12 and 13, I want to calculate c by a equals to how much and b by a equals to how much. So you just apply the algebraic basic algebraic operations and you will get to know कितना हो जाएगा. c अपॉन a equals is 2 k1 upon k1 plus k2, whereas b upon a is k1 minus k2 upon k1 plus k2. It's a very very important relation. फाइन. एक छोटा सा रिकैप, हमने अभी तक क्या किया है. वैसे आप वापस से रिवर्ट करके फिर से देख सकते हैं वीडियो को, बट लेट मी रिमाइंड यू हियर ओनली. हमने पोटेंशियल स्टेप डिफाइन किया. ओके, पोटेंशियल स्टेप डिफाइन करने के बाद हमने दो केसेस देखे. एक केस वो जबकि E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, दूसरा केस वो जबकि E इज़ लेस देन वी नॉट. हम पहले केस के ऊपर बात कर रहे हैं. हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा दोनों रीजन्स के लिए, रीजन 1 के लिए, रीजन 2 के लिए, उसका सोल्यूशन लिखा. एंड देन फाइनली उसके सोल्यूशन में सारे टर्म्स को पहचाना हमने कि कौन से रिफ्लेक्टेड वेव है और कौन सा ट्रांसमिटेड वेव है और कौन सा इंसिडेंट वेव है. ठीक है. एंड देन फाइनली वी कुड establish a relation between A, B and C. Now I want you guys to calculate the reflection coefficient and transmission coefficient. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपको ये बताएगा कि जो इंसिडेंट वेव है वो उसका कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ये बताएगा कि कितना वो ट्रांसमिट हो रहा है. सो हाउ मच इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड हाउ मच इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड. सो दिस इज डिफाइंड एज R is mod of J reflection upon J rather J reflected, you write. Okay. T is transmission coefficient. This is J transmitted over J incident. Give it equation 16, equation number 17. Now you will wonder what is J. So guys, J is nothing but this is probability current density. जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, एग्जैक्टली सेम वे ये जो फ्लो हो रही है, दिस इज क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन में हम ये अज्यूम करते हैं कि दिस इज नथिंग बट द वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द वेव फंक्शन. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J ये डिफाइन होती है
J is defined as I h cut upon 2m psi, let me write psi x, d by dx of psi star x minus psi star x d by dx of psi x. This is what is called the probability current density. ठीक है, wherein psi is a wave function and psi star is complex conjugate a wave function. ठीक है, so come on, let us calculate it for all. इंसिडेंट वेव के लिए करंट डेंसिटी निकालें. सो दिस विल बी आयोटा एच कट अपॉन 2m psi incident x d by dx psi incident minus, oops, this will be psi star incident d by dx of psi incident. कितना था आपका psi incident? Remember, psi incident was a e to the power iota kx. So complex conjugate will be a star e to the power minus iota kx. It should be k1x, right? Fine. So now put this value. This will be iota h cut upon 2m a e to the power iota k1x d upon dx a star e to the power minus iota k1x minus a star e to the power minus iota k1x d upon dx a e to the power iota k1x. Fine. Okay, so you take out a star outside. This makes your mod of a square, and this is what? E to the power iota k1x and minus iota k1 e to the power minus iota k1x. This is minus e to the power minus iota k1x multiplied by iota k1 e to the power iota k1x. This cancel, this makes it 1, again this makes it 1, so you are left with iota h cut 2m a square so this is mod of a square minus iota k1 and here also minus iota k1, so this ultimately makes it h cut k1 upon m mod of a square. This is J incident. Oh, so this will be your equation number 18. Similarly guys, you are supposed to calculate J reflected, that should be minus h cut k1 upon m mod of b square, let us call this 19, and J transmitted h cut k2 upon m mod of c square. So finally you got the probability current density for incident, reflected and transmitted beam. So you can now आराम से calculate reflection coefficient. Okay, so reflection coefficient will be none other than b square upon a square
I hope you are not lost. Go and check equation number 16. What was that? Reflection coefficient was J reflected by J incident. You have got J reflected ka value, J incident ka value. Okay. So this is mod of B square by mod A square. Similarly, transmission coefficient will be K2 upon K1 mod of C square upon mod of A square. Now, here we'll use these equations wherein you had calculated C upon A and B upon A. Right? So, once you use this equation 14 and equation 15 here, so using equation 14 and 15, you get reflection coefficient as K1 minus K2 whole square divided by K1 plus K2 whole square, and T as 4 K1 K2 upon K1 plus K2 whole square. So let us call this equation 21 and this as equation 22. Guys, you are about to draw a very good physical significance out of this exercise. So just do it. R plus T, and tell me how much is this? You have calculated. This is R, this is T. Just do R plus T. How much it should be? It should be 1, right? The reflection coefficient plus transmission coefficient, these two should add up to give you 1. And this is what you are getting. Do one thing. Just put the value K2 by K1 is equal to, say, kappa, and put this in equation 21 and 22. How much do you get? Reflectivity or reflection coefficient 1 minus kappa whole square 1 plus kappa whole square, and transmission coefficient becomes 4 kappa upon 1 plus kappa whole square. Let us call this equation 23. This is equation 24. Guys, here it is. What is kappa? K2 by K1. And what was it? K2 was nothing but under root 2m E minus V naught upon h cut square, and this one was under root 2m E upon h cut square. So this was basically under root 1 minus V naught upon E. Right? So this is kappa. Now you remember what was V naught, what was E? Okay, let me help you out. See, V naught was the height of the potential step and E was the energy. Now there are 3 cases, guys. Case number 1, when E is far more greater than V naught. What happens then? E is far more greater than V naught. So this is 1 minus V naught upon E. This becomes very much larger. So this term can be negligible. So kappa can be considered as 1. And when you put this kappa equals to 1 here, so what you get? R is 0 and T is almost 1. Meaning
This is almost the classical case when you have a particle which has energy which is very higher than this energy of the potential step height. So you hardly get any reflection and the entire wave is transmitted, right? Okay, case 2, when E is almost equal to V naught. In this case, V naught and E gets cancels out, it gets 1, you get kappa is almost equals to 0, and this gives you, when kappa becomes 0, this reflection coefficient becomes 1 and this becomes 0. So this tells you that in case the energy incident, the particle with incident energy E exactly matching the potential step height V naught, there will be, all the waves will get reflected back and there will be no transmission. And case number 3, when energy is lesser than V naught, this is we are going to see in the next section. So the next section will be what happens when energy is lesser than V naught. Fine. So this is all for this particular section. In case you are asked this question in examination, so there will be particular question. Suppose somebody asks you that in a potential step problem, show that the resistivity is almost the reflection coefficient, that is reflectivity, is almost 0 for the case the particle's energy is much larger than the potential step height. Then you'll have to show this entire calculation and you have to come till this point, and here you have to show it that, look boss, I have showed it by proving it that this is going to be 0 in this case. Fine. Thank you.